Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Naruttamam Deving Sarasating Vyasam Tato Jayamudirai Nashtaprayeshu Abhadreshu Tang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. So today we're going to do the third verse of the Chatushlok. And what about the first and second verses? How many of you have memorized the first verse? Only this few. Okay. কি হলো তোমরা প্রথম ভার্সটা মুখস্থ করোনি? করেছো? তাহলে হাত তুলছো না কেন? ইংরেজি বুঝতে পারছো না? দেন হাত তুলতে কষ্ট হচ্ছিল? কি ভুলে গেছে? Okay. Prem Bhakti? Aham evasam evagre nanajasad asad param nanajasad etacha vasisate Not jo avashishyate, jo avashishyeta swasma. Okay. From the girl side, who all memorized it? Okay, तुम बोलो. नहीं, वो पहले जो first verse. Okay, very good. So who did not memorize? Don't worry, I won't punish you. Okay, try to memorize. I told you that these 4 verses are very important. Won't it be nice? Why did Prabhupada want us to memorize verses? You know why Prabhupada wanted us to memorize verses? What does Prabhupada want from us actually? What does Prabhupada want from us? Spread Krishna consciousness. Yes, very good. Prabhupada wants us to spread Krishna consciousness. And how do we spread Krishna consciousness, Sitaram? By becoming knowledgeable. Yeah, by preaching. Now, in order to preach, we have to know. And we also have to be impressive. Like, when somebody preaches and speaks Sanskrit, how do you feel? How do you feel? Braj Kishore? When somebody preaches to you and he quotes verses, then how do you feel? Very impressed. So, do you want to preach? Yes. Huh? Okay, very good. So, in order to preach, do you have to, if you can recite verses to substantiate what you are saying, won't it be nice? Huh? Won't it be nice, Vaishnav Charan? Huh? So, should we memorize verses? How many verses do you memorize? Did you memorize? Only just these 2 verses. No other verses.
Okay. Okay. Okay, so how many of you remember the second verse? Okay, I can see that the first hand that went up was Brajakishori's. Okay, Brajakishori, you recite the second verse. विधेयत्वं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा आत्मा. Very good. Very good, very impressive. Yesterday, I requested Brajakishori to memorize the verse and she did. Shamangi, you also raised your hand. Let's hear. किताब नहीं देखना. Very good. Also you are. Radhika, it seems that you also memorized it. No? I thought you were reciting it. Okay. Okay. Will you memorize it tomorrow? Huh? Right? You can very easily. Did you memorize Jack and Jill went up the hill? Yes? So if you can memorize that, you can also memorize this. She's just memorized the whole Vibhavati Sesha. She sings So wonderful. the whole song completely by herself. Very good. Very good. So when will you sing for us? Do you have to have the permission from your mother for everything? Okay, it's all right. Don't worry. Thank you. Somebody knock at Kevin's door and see what's he doing. Lakshminath, you can go and see. Okay, so huh? Nobody is here. Okay. Anyway, come in. So today is the third verse. How do you memorize the third verse? How should we do it? First thing is get the word for word meaning. Huh? Yatha, just as, Mahanti, the universal, Bhutani, elements, Bhutesu, Uccha, Avacheshu, Bhuteshu Chashava, Bhuteshu Chash, Bhuteshu Cha Bacheshanu. Bhutesh, it's a combination of three words. Bhuteshu Uccha Avacheshu. So Bhuteshu and Uccha will become Bhuteshucha and Avacheshu. Bhuteshu Cha Bacheshu. Bhuteshu Cha Bacheshu. The minute and gigantic. Anum Uccha Avacheshu. Bhuteshu Cha Bacheshu. Anu, after. Pravishanti, entered. Apravishanti, not entered. Tatha, so. Teshu, in them. Na, not. Teshu, in them. Aham, myself. And the meaning of the entire verse is
O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created, and at the same time, I am not outside of everything. So in this way, Narayan is instructing Brahma. Please know that the universal elements, what are the universal elements? Mahanti Bhutani. This Mahanti Bhutani is commonly known as Mahatattva, which is the basic ingredient for the entire cosmic creation. Everything has been created out of Mahatattva. So, just as Jatha means just as, Mahanti Bhutani Bhuteshu Cha Vacheshu and Anu Bhuteshu Cha Vacheshanu. Anu means minute, and Ucha means Bhuteshu Ucha Avacheshu, minute and Ucha and Avacha. Ucha means high and Avacha means low. So great and small, big and minute. Bhuteshu Ucha Avacheshu Anu Pravishanti. Anu means after, Pravishanti, entering, entered. Apravishanti. Pravishanti, apravishanti. Enters yet doesn't enter. And Tatha, similarly, just in that way, so, Teshu, na Teshu. In them, yet not in them, aham, I myself. Who is saying it? Narayan, the Supreme Personality of Godhead, is telling. To whom? Brahma. Okay, so you got the understanding. What he is saying, just as the Mahanti Bhutani entering into the cosmic creation doesn't enter. Similarly, although I am in everything, yet I am not inside them. Isn't it a mystery? Isn't it a riddle? I am in them, yet I am not in them. Pravishanti, apravishanti. I enter, yet I do not enter. So, Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Bhuteshu Chavacheshu na. Bhuteshu Chavacheshu na. I'm sorry. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Okay. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Tatha teshu na teshaham. Tatha teshu na teshaham. Tatha teshu na teshaham. Tatha teshu na teshaham. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Pravishtanya Pravishtani. Tatha teshu na teshvaham. Tatha teshu na teshvaham. Tatha teshu na teshvaham. Tatha teshu na teshvaham. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Yatha Mahanti Bhutani. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu. Bhuteshu Chavacheshanu.
प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेषां तथा तेषु न तेषां तथा तेषु न तेषां. Okay, so first word of the first line. Okay, yatha. So who memorized the first line already? Okay, Mitravinda. यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि. Then the second line, the first word of the second line. Okay, tumi bolo. Acha. And the next, the whole line. भूतेषु च अवचेषु अनु Bhuteshu cha vacheshvanu. Then, okay, 3 times or did already? Okay. Then the third line. राघव पंडित जी क्या बोल रहे हैं? किताब देखते हुए प्रविष्ट. ओके ओके, प्रविष्ठानि प्रविष्टान्य प्रविष्ठानि प्रविष्टान्य प्रविष्ठानि. Then fourth line. Okay. तथा तेषु न तेषां तथा तेषु न तेषां तथा तेषु न तेषां तथा तेषु न तेषां. Okay, now here one thing we must take note. How many of you studied Sanskrit or Hindi grammar? Okay, how many of you know Sandhi? What is Sandhi? Huh? So few. Huh? Okay, Braja Kishore, what is Sandhi? दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द को बनाना. 2 शब्द जब मिलकर एक हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है. संधि का नियम है कुछ, संधि का कुछ नियम है ना? कैसे नियम है पता है? एक दृष्टांत दे दो. ओके, शामंगी वांटेड टू गिव एन एग्जांपल. एक बताओ, अगर एक भी याद है. जो पहला नियम क्या है? तो हाँ, स्वर संधि कैसी है बताओ, एक दृष्टांत तो. नहीं, अकार और आकार के बाद अकार और आकार रहने से क्या होता है? एक शब्द अगर आकार से शेष होता है और दूसरा शब्द अगर आकार से शुरू होता है, हाँ, वो संधि होके क्या होता है? संधि का नियम क्या होता है? आ होता है. ये सरल नियम है. जैसे हिमालय. ओके, वेरी गुड. गंगा नारायण जी एक बहुत सुंदर संधि बना दिया. हिम और आलय शब्द शेष हो रहा है कैसे? आ से. शुरू हो रहा है कैसे? आ से. सो दोनों युक्त होकर क्या हुआ? आ हो गए हैं. हाँ, हिमालय एक शब्द हो गए हैं. हिम आलय हिमालय. अच्छा, वैसे इकार और इकार के बाद ई और ई रहेगा तो क्या होगा? ई हो जाएगा. दीर्घ ई होता है. और यहाँ अच्छा, जैसे यहाँ भूतेषु और उच्च ये दोनों मिलकर क्या हुआ? हाँ, उ और उ मिलकर हाँ, दीर्घ उ हो रहा है, लंबा उ हो रहा है. उ. हाँ, भूतेषु उच्च भूतेषु च. और उच्च शुरू हो रहा है कैसे? हाँ, उच्च आ से शुरू हो रहा है. हाँ, और उसके बाद उच्च अब चेशु. उच्च अवचेशु ये मिलकर क्या हुआ? उच्चावचेशु. एंड उसके पश्चात अनु.
ये भी मिल गए हैं। हाँ, उच्च अवचेषु, हाँ ये बहुत सुंदर। हाँ, एक शब्द आया है। ऊ के बाद आ रहने से क्या होता है? हाँ पारुल, ऊ के बाद आ होने से क्या होता है? ब होता है। हाँ, तो क्या है, ऐसा क्या हो गए हैं? हाँ, ब हो गए हैं। उच्च अवचेषु अनु, अवचेषनु, ब हो गए हैं। हाँ। तो ये संस्कृत भाषा कितना कितना सुंदर है ना। थोड़ा ये संधि, ऐसी संधि संस्कृत से ही केवल जो भाषा का उद्भव हुआ है उसमें है, नहीं तो नहीं होता है। और कोई भाषा में ऐसे संधि का प्रयोग नहीं होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? जो लोग संस्कृत बोलते हैं वो क्या मूर्ख है या बुद्धिमान है? जो भाषा जितना ही रिच होता है, वो भाषा बोलने वाला भी उतना ही रिच होता है। जैसे फैक्ट्री वर्कर कैसे बातें करते हैं, जो कारखाना में काम करते हैं जो और ठेला ठेलते हैं, रास्ता में माल बहते हैं कूली लोग, वो कैसे बातें करते हैं? जानता नहीं उसका भाषा। और नहीं तो सोचो ये जैसे बच्चे लोग जैसे हैं, उसका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए उसका भाषा भी डेवलप नहीं होता है। बल्कि जो बहुत पंडित है वो कैसे बोलते हैं, उसका भाषा बोलने का तरीका कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही काव्यिक होता है, बहुत ही भाव गंभीर होता है, बहुत ही शब्द का प्रयोग बहुत ही सुंदर होता है। अच्छा, मैं इंग्लिश क्लास में हिंदी बोलना शुरू कर। अच्छा राघव पंडित, कुछ कहना है? दो वर्णों के मेल से संधि होती है और शब्दों के मेल से समास होता है। हाँ, राइट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, थैंक यू फॉर करेक्टिंग ब्रजकिशोर। हाँ, ये सही है। हाँ, दो वर्ण का मिलन होने से उसे संधि कहा जाता है, दो शब्द का जो मिलन होता है उसे समास कहा जाता है। तो एक समास का दृष्टांत दे दो। दश आनंद, दश धन आनंद, दश आनंद। ये कौन सी समास, ये कौन सी समास हुआ है? बहुव्रीहि। हाँ, और बल्कि संधि और समास, जो संधि जो है वो समास भी होता है, समास जो है वो संधि भी है। हाँ, बल्कि समास का प्रयोग का जो नियम है वो शब्द के माध्यम होता है, और संधि का जो नियम है वो अक्षर के, वर्ण की। जैसे तुम बोला 10, शेष कैसे होता है? 10 अ से, और आनंद शुरू होता है कैसे? वो तो संधि भी हो गया, दश आनंद। वैसे ही हाँ, ये जो संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है, बहुत गंभीर है। और हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, सब का उद्भव संस्कृत से हुआ है। तो इसलिए ये संस्कृत का ग्रामर जो है, इस भाषा का ग्रामर भी, व्याकरण भी उसी के भित्ति से हुआ है। और केवल हमारे भाषा नहीं, विदेशी भाषाओं भी संस्कृत से आया है। यद्यपि कोई भाषा वो सही रूप में सत्य ही मान लेते हैं कि वो संस्कृत से उसका उद्भव हुआ है। जैसे जर्मन भाषा, उन लोगों ने स्वीकार करते हैं कि उसका उद्भव संस्कृत से हुआ है। इसलिए जो उसका जो स्रोत है जर्मन भाषा का, उसको बोलता है इंडो जर्मैनिक। जर्मन भाषा में बोलते हैं इंडो गर्मानिश। इंडो का मतलब भारतीय, इसका उद्भव हुआ कहाँ से? भारत से। तो जर्मन लोग भारत से गए थे, वो मान लेते हैं। जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भारतवासी थे। वैसे यद्यपि लैटिन स्वीकार नहीं करते हैं, उसका भी स्रोत संस्कृत से है।
दो मुख्य जो ये हैं भाषा हैं, भाषा का जो स्रोत है यूरोप में, वो मुख्य दो हैं, लैटिन और इंडो जर्मन। बल्कि असल में दोनों ही ये है संस्कृत से ही। ये जो यूरोपियन लोग जो हैं, जैसे रोम के रहने वाले, ग्रीक के रहने वाले, वो सब कहाँ से गए थे? भारत से गए थे। प्रभुपाद जी बताए थे, क्षत्रियों को जब परशुराम संहार कर रहे थे तो कुछ क्षत्रिय भाग गए थे। तो भागकर उन्होंने उस स्थानों में अपना उपनिवेश स्थापन किया। ओके, सो कौन कौन ये पूरा श्लोक कल कंठस्थ कर लेंगे? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर द एश्योरेंस। यथा, just as, Mahanti, the universal, Bhutani, elements, Bhuteshu, Uccha Avacheshu, in the minute and gigantic, Anu, after, Prabhishtani, entered, Aprabhishtani, not entered, Tatha, so, Teshu, in them, Na, not, Teshu, in them, Aham, myself. Translation: O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created, and at the same time I am outside of everything. So please repeat after me. O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created, and at the same time I am outside of everything. So everyone understood? Just as the Mahanti Bhutani, the universal elements, although enter into everything, do not enter into everything. Similarly, I also, although I enter into everything, but yet I am not in them. So this is the third verse. So Prabhupada is giving the purport. The great elements of material creation, namely earth, water, fire, air and ether, all enter into the body of all manifested entities. The seas, mountains, aquatics, plants, reptiles, birds, beasts, human beings, demigods, and everyone materially manifested. And at the same time, such elements are differently situated. In the developed stage of consciousness, the human being can study both physiological and physical science. But the basic principles of such sciences are nothing but the material elements and nothing more. The body of the human being and the body of the mountain, as also the bodies of the demigods, including Brahma, are all of the same ingredients: earth, water, etc. And at the same time, the elements are beyond the body. The elements are created first, and therefore they entered into the bodily construction later. But in both circumstances, they entered the cosmos and also did not enter. Similarly, the Supreme Lord, by his different energies, namely the internal and external,
is within everything in the manifested cosmos, and at the same time he is outside of everything, situated in the kingdom of God, Vaikuntha Loka, as described before. This is very nicely stated in the Brahma Samhita as follows. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhabhitabhis Tabhirja Eva Nija Rupa Taya Kalabhi Goloko Eva Nivasati Akhilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamahan Bhajami. I worship the personality of Godhead Govinda, who, by expansion of his internal potency of transcendental existence, knowledge and bliss, enjoys in his own and expanded forms. Simultaneously, he enters into every atom of the creation. Goloko eva nivasati akhilatma bhuto. Akhilatma bhuto means in everything. And Goloko eva nivasati means he resides in Golok. He resides in Golok, but at the same time he is in everything. Andantarastha paraman vichayantarastham. He is in every universe, and at the same time he is also in every single atom. So that is his inconceivable potency. Krishna is saying, Pashyame yoga vaisharam. That look at my yoga aisharya, yoga vibhuti, my mystic opulence, my mystic power. The mystic power means unusual power. So when something enters into something, then it remains there, isn't it? When you enter into the house, where are you? Are you inside the house or outside the house? Inside the house. Then can you say that I am inside, at the same time I am outside? We cannot, but Krishna can. Although Krishna is inside the house, he is outside the house. Although Krishna is staying in Golok, he is in every single atom. And simultaneously he can be everywhere. Now do you think you have that power? Does anybody have that power? But who has this power? Krishna. God. Are you God? No. So it's a simple calculation, simple equation. God is in everything. And yet he is not in everything. Are we in everything? No. Therefore, let us not make this false claim that we are Bhagavan. Once Prabhupada, somebody claimed that somebody was telling that his guru is Bhagavan. His guru claims that he is Bhagavan. Then Prabhupada said that, okay, then I send a challenge to your guru. And the challenge is that Krishna lifted Govardhan hill and held it on his little finger of the left hand for 7 days. So you ask your guru to lift a table with his left hand and little finger and hold it for 7 minutes. So he went to his guru and told him, Swamiji, Swami Bhaktivedanta sent you a challenge. That he asked you to hold, since you are claiming that you are God, Swamiji said that you should lift this table with your left hand and keep it holding there for 7 minutes. So why is that? He said, because Krishna is God and he lifted Govardhan hill, a mountain, on the little finger of his left hand, and he held it for 7 days. So he made a challenge that if you are God, then at least make some sort of display. You may not be able to go to Govardhan now,
to lift it, but the table that is there in your room, why don't you hold it? Why don't you lift it and hold it for 7 minutes? Then his guru's answer was, how is it possible? And he left his guru, he never went back to him. And he came back to Prabhupada and surrendered himself to Prabhupada. That is the difference between real God and imitation God. So if you come across some God nowadays, nowadays also there are many gods, so if you come across such a God, then make a challenge to him. If you're God, lift the table with your left hand and keep it holding for 7 minutes. Raghu Pandit, is it a fair challenge? Okay. अगर कोई भगवान को मिलेगा तो उसको ये बोलना. ऐसी बात ही नहीं करते, तो उल्टी बात करते, अरे भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात. He answered, why are you talking this nonsense? You are contaminated by bhakti. भस्म कर देगा या भस्म हो जाएगा? आपको भस्म, जो व्यक्ति उनसे ऐसे प्रश्न करे तो आपको भी भस्म हो जाएगा. अच्छा, और तुम बोलना आपका देहांत के बाद आप भी भस्म हो जाएंगे. वो कुछ नहीं, ऐसे ठीक है. बल्कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति बोलते हैं वो भगवान है या चीटर है. भगवान खुद जब अपने बारे में भगवान जब स्थापना किया, 10वें अध्याय में भगवद गीता का 10वें अध्याय में 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक भगवान अपना वैभव बताया कि मैं हूँ. भगवान ऐसे पूरा ऐसे नहीं बोला, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सारे जगत का आश्रय हूँ और मैं ही सारे जगत का पालन करने वाला हूँ. तो ये ऐसे अपना स्वरूप प्रतिष्ठा करने के पश्चात भगवान क्या किया? 11 अध्याय में भगवान क्या किया? अपना विश्व रूप दिखाया. तो अगर कोई बोलेगा कि आप भगवान हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप आपका विश्व रूप थोड़ा दिखा दीजिए. तो वो बोलेंगे तुम्हारे आंखें नहीं है मेरा विश्व रूप देखने. तो हम बोल सकते हैं भगवान तो अर्जुन को कृपा करके उसको दर्शन का आंखें दे दिए थे, तो आप भी कृपा करके हमें ये आंखें दे दीजिए ताकि आपका विश्व रूप हम देख सकते हैं. असल बात यह है कि भगवान भगवान है, जीव जीव है. और जब जीव होकर भगवान अपने आप को भगवान कहते हैं वो कौन है? जो जीव होकर अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान रूप में अपने आप को प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, वो कौन है? जैसे हिरण्यकशिपु भगवान बनना चाहा, वो हिरण्यकशिपु क्या है? असुर है. रावण क्या था? चाहता भगवान बनना चाहा, वो क्या है? असुर है. तो जो जीव होके जो बोलता है कि वो भगवान है, असल में वो क्या है? असुर है. ये सरल विचार है. और असुर को अनुसरण करने से क्या होता है? असुर का अनुसरण करने से सत्यानाश हो जाता है. तो आप असुर को अनुसरण करेंगे या भगवान को अनुसरण करेंगे? भगवान कौन है? परमेश्वर भगवान है श्री कृष्ण. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो ऐसे चतुश्लोकी में इसका ही स्थापना हो रहा है. भगवान अपना स्वरूप, ब्रह्मा जी के अपना जो स्वरूप तत्व, भगवान को ब्रह्मा जी ने देख चुके थे. अगेन आई स्टार्टेड इन हिंदी. मैं सुना था पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लंदन से वापस आए थे, तब जब फर्स्ट लेक्चर जब उन्होंने दे रहा था, उन्होंने पॉलिटिकली एक्टिव थे,
तो लेक्चर जब शुरू किया था वो हिंदी में शुरू किया था, बल्कि 2-5 मिनट के बाद वो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। हाँ, तो हमारे यह उल्टा हो रहा है। हम अंग्रेजी में शुरू किया बल्कि हिंदी में उसका हम हिंदुस्तानी। So those who claim, did everybody understand in English? Arti, did you understand what was going on this way? You understand? So you speak Hindi nowadays. Okay, very good. We made a very simple calculation that when a jiva claims that he is God, he is a demon. Only a demon, in spite of being a jiva, claims himself to be God. So when somebody, in spite of being a jiva, living entity, claims that he is God, he is a demon. And when one follows a demon, then what happens? He is doomed. Now, do we want to follow the course of doom, or do we want to follow the course of divinity? Do we want the course of doom or divinity? We want the course of divinity. So if we want to follow the course of divinity, then we simply have to follow Krishna. And time again it has been established in the scriptures, by Krishna's own demonstration, by Krishna's own instruction, that he is God. And that is what is being established in Srimad Bhagavatam, and that is why these 4 verses are so important. So what is the first verse? Aham eva samevagre nanna jat sad asat param. I was there in the beginning of the creation. I was there, and nanna jat sad asat param. When sat and asat, the cause and effect, either of one not existing, then I was there, and paschadaham jadetacha yoba shishyeta so asmiyaham. And whatever remains after annihilation, that is also I will continue to exist even after annihilation. The material nature will be created, maintained, and destroyed, but Krishna will continue to exist. The next verse, Riterthang jat pratiyeta. Now let us go back to the same point. Now can we say, aham eva sameva gre nanda jat sadasat param? Can we say it ourselves? No. I was there before the creation. Even when the creation is existing, then also I won't be here. When we kick the bucket, you know the expression, kick the bucket? Sitaram will explain. When we die. It's a colloquial English expression, kick the bucket. So when you kick the bucket, then, which means you die. When we die, what will happen? This world will exist, but we won't be here. Right? So what to speak of, I being existing even before the creation and continue to exist even after annihilation. And not only exist, how does Krishna exist? When we go deeper into it, we can find out how does Krishna exist even before and after. Not even Krishna. Krishna's expansion is Mahavishnu. And what is the creation of the material nature? Mahavishnu's glance towards mind. He just glances, and when he withdraws the glance, what is the secondary creation of Mahavishnu? He breathes, Jashaika Nishashita Kala Mathavalamba Jivanti Loma Bilaja Jagadandanatha. The life of Brahma, the duration of one universe, what it is? Just one breath of Brahma. He exhales and he inhales. When it exhales, the universe is created, and when he inhales, the universes are annihilated, destroyed.
So not only he exists, how does he exist? Just by what is the cost? What is the duration of the cosmic manifestation? Just one breath. Just one breath. Brahma, Mahavishnu. Can we say that about ourselves? Can we say that I breathe, and therefore the universes are created? And as long as I don't inhale, the universes will be existing. And when I inhale, they will all come within my body. Can you say that? If you can't, then don't claim that you are God. Isn't it a very simple conclusion? Then riterthang yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tad viddad atmano maya jatha bhasho jatha tama. Rite means without. What is without any connection to me, that is Maya. And what is this Maya? The Maya is a reflection in darkness. On the other hand, if something is in connection to Krishna, then what it is? That is spiritualized. Maya means material and spiritual. Opposite to Maya, the spiritual world, is Satchidananda. So if it is in connection to Krishna, it is spiritual. If it is separated from Krishna, it is Maya. Are you connected to Krishna or separated from Krishna? Connected. Are you connected, Lakshminath? Okay, very good. Sorry, Maharaj, this point of Natvevaham Jatu Nasam, if someone uses that, never was there a time that I did not exist, nor you, nor all of these things, and never will there be a time that any of us will cease to be. Yeah. So Krishna is definitively saying that we are. Yeah. Is it just our placement or what? Right. And that is, when you are situated in your spiritual identity, you are existing eternally. Right? When you are in connection to Krishna, then yes, then you are remaining in the spiritual sky. Then you will see Mahavishnu is breathing and the universes are creating and disappearing. Right? But when you are in the body consciousness, in the material consciousness, yes, then you are a part of this material nature. Right? So the elements were created first, and therefore they entered into the bodily construction later. But in both circumstances, they entered the cosmos and also did not enter. Okay, so then we read up to this part, that I worship, that Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tabhirja eva nija rupa taya kalabhi goloko eva nivashati akhilatma bhuto. Although Krishna, who by expansion of his internal potency of transcendental existence, knowledge and bliss, enjoys his own and expanded forms, simultaneously he enters into every atom of the creation. This expansion of his plenary parts is also more definitely explained in the same Brahma Samhita as follows. Ekoppaso rachuitum jagadanda kotim jat shakti rasti jagadanda chaya jadanta andantarastha paramanu jayantarastham govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship the personality of Godhead Govinda, who by one of his plenary portions enters into the existence of every universe and every particle of the atoms, and thus unlimitedly manifests his infinite energy all over the material creation. So in this way, he displays his Achinta Shakti. The impersonalist can imagine or even perceive that the Supreme Brahman is thus all-pervading, and therefore they conclude that there is no possibility of his personal form. There is no possibility of his
personal form. Herein lies the mystery of his transcendental knowledge. This mystery is transcendental love of Godhead. What is the mystery by which one can actually understand God? By devotional service. This is this transcendental love of Godhead. The mystery is transcendental love of Godhead. When one loves Krishna, then one can understand Krishna, not otherwise. And one who is surcharged with such transcendental love of Godhead can, without difficulty, see the personality of Godhead in every atom and every movable and immovable object. If we love Krishna, then we can see Krishna in every atom, in every moving and non-moving object. Yes, Krishna is there. Just as only when we see the deities in the temple with love, we see Krishna. If we don't see him with love, then what do we see? We see the statues carved out of stones. If we see with our eyes, mundane eyes, we see a statue. But if we see with love, then we see the Supreme Personality of Godhead. Now what needs to be done? What should be done? Should we see him with love or should we see him with reason? The vision is the real mystery of spiritual knowledge, as stated by the Lord in the beginning. Sarahasam tadangam cha. This mystery is the most confidential part of the knowledge of the Supreme, and it is impossible for the mental speculators to discover by dint of intellectual gymnastics. The mystery can be revealed through the process recommended by Brahmaji in the Brahma Samhita as follows. Premanjana churita bhakti vilochanena santas sadaiva hrideshu vilokayanti yang syama sundaram achinta guna swarupam govindam adipurusham tamam bhajami. I worship the original personality of Godhead Govinda, whom the pure devotees, their eyes smeared with the ointment of love of Godhead, always observe within their hearts. This Govinda, the original personality of Godhead, is Sham Sundar with all transcendental qualities. Okay, so today I will read up to this much and we'll continue this verse tomorrow also. So everyone, I think, committed that he or she will memorize the verse tomorrow. ठीक है? सब ये किया है, कल सब कंठस्थ हो जाएगा. Yesterday I was noticing Braja Kishore, so diligently he was trying to memorize the verse. And that's why when I heard Braja Kishore reciting the verse, I knew Braja Kishore must have memorized it. Shyam Mohan, kal ke mukh se aave? Okay, very good. Sitaram. I've already memorized. Wonderful. Thank you. But we'll see the demonstration tomorrow. Hare Krishna. Any question? Yes. हिंदी में बोलेंगे. हाँ बोली. आपने जैसे बताया कि कृष्ण ने महाविष्णु जो है कृष्ण का एक्सपांशन है, तो वो जो कृष्ण है वो अव्यक्त है कि व्यक्त है? क्या लगता है आपको? विजिबल है कि नॉन विजिबल है? हाँ ना, आपका क्या लगता है? क्योंकि अभी जो हम कृष्ण को देख रहे हैं वो विजिबल में देख रहे हैं, तो इसलिए संशय हो रहा है कि वो विजिबल है कि? हाँ जरूर जरूर. वो प्रेमांजन छुरी तो आंखें जब प्रेम के द्वारा रंजित होगा, मतलब जब हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होंगे, तब उस प्रेम के कारण हम भगवान को दर्शन कर सकेंगे. मतलब भगवान खुद हमें दर्शन करने का अवकाश देंगे, मौका देंगे.
अपने आप को दिखाएंगे। अगर भगवान नहीं अपने आप को दिखाते हैं तो हम उनको कभी नहीं देख सकते हैं। जैसे सूरज अगर गगन में उदय नहीं होता तो सूरज को हम देख सकते हैं? हाँ, कभी जब रात को 12 बजे हैं तो चाहे आप कितना ही कोशिश करें, आप सूरज को देख सकेंगे? हाँ, नहीं। बल्कि आप और 6 घंटा अगर वेट करते हैं और आंखें खोल के रखते हैं तो 6 बजे, हाँ, या 6:30 बजे सूरज निकल जाता है। जब सूरज निकल जाता है तब जी भर के हम सूरज को देख सकते हैं। हाँ, ये वाले जो है कृष्ण वो तो व्यक्त दिख रहे हैं, लेकिन जिन्हें ब्रह्मा को एक्सपांड किया, तो महाविष्णु को जिसने एक्सपांड किया, हाँ, उनको भी दर्शन हो सकता है क्योंकि उनका रूप है ना। लेकिन जब उन्होंने एक्सपांशन किया तब वो अव्यक्त है कि व्यक्त है? भगवान हर स्थिति में व्यक्त है। भगवान के रूप में उन्होंने हर स्थिति में व्यक्त है। ब्रह्म जो भगवान का कांति है, ज्योति है, वो अव्यक्त है। ब्रह्म अव्यक्त है। बल्कि भगवान बान का मतलब क्या होता है? ज्ञानवान मतलब क्या है? जिसके पास ज्ञान है। धनवान तो जिसके पास धन है वो व्यक्ति है या लाइट है? व्यक्ति है। हाँ, तो जब बान शब्द का प्रयोग होता है तो इसमें व्यक्तित्व का प्रकाश हो जाता है। जब इसलिए जब भगवान शब्द का वो प्रयोग होता है, भग अस्ति इति भगवान, जिनके पास भग है, तो उन्होंने व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, उनका रूप है। चाहे हम उनको देख सके या ना सके, पर उन्होंने अपना स्वरूप लेकर विराजमान है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है अब? हाँ, मनमोहन सिंह। आप उनको देखे हैं कभी? देखे नहीं। अब आप देखे नहीं, हाँ, पर आप जानते हैं कि वो है ना। हाँ, वैसे ही हम ऐसा नहीं कि हम जब देखेंगे तभी हम मानेंगे कि वो है। जैसे एक साधारण व्यक्ति मनमोहन सिंह को आप नहीं देखे हैं, हाँ, आप लालू प्रसाद को देखे हैं। उसको भी देखे नहीं है, बल्कि आप उसके बारे में जानते हैं। हाँ, आप स्वीकार करते हैं। तो वो क्या आँख साकार है, निराकार है? साकार है। तो ऐसा नहीं कि जब हम उनको नहीं देख पाते हैं तो वो निराकार बन जाता है। नहीं, अपना स्वरूप में वो साकार है, व्यक्त है। Lord claims in this verse that He exists in everything and outside also. So my question is that, is there any material example to make the people understand this? Like material example. Is God material? Then how can you give a material example? Can anybody in the material nature be within and without? One example can be given, as Prabhupada gave in the purport. Just an example, for the sake of example. Just as a king, the king, he may be living in his palace, but his presence is felt in the entire kingdom. Isn't it? He may not be there, but his representatives, his agents. So if somebody does something wrong, if somebody does anything, then the police will catch him. Now who is catching him? It's the king's system which is catching him. So similarly, just as, or I gave another example, Sony in Indore. Sony company in Indore. Mr. Sony, I don't know whether his name is Sony, the proprietor of the company. He may be sitting in Japan, but he is present in Indore through his agency, right? So ऐसे through one's potency, one can expand himself. So if an ordinary human being can expand himself in this way, what to speak of the Supreme Personality of Godhead? Got the example? Yes, Parshuram. इसमें वो एग्जांपल दे ना सकता है कि चांद है वो सब बाल्टी में है भी और नहीं।
चांद है बाल्टी में। He's talking is Akash. Outside, inside. ठीक है, ये हाँ, ये भी तुम इसमें इसके जैसे यथा भाषो यथा तम, जैसे रिफ्लेक्शन है। बल्कि वो बाल्टी में जो तुम देख रहे हो तो चांद नहीं है, बल्कि एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है कि चांद का जो रोशनी है, रोशनी चंद्रमंडल में, अगर चंद्रमंडल के बाहर रोशनी के द्वारा चंद्रमा का उपस्थिति हो रहा है। 34 श्लोक में से 34 श्लोक में कहा गया है कि योग माया और महामाया दोनों ही कृष्ण की दोनों शक्तियां हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ऐसा है कि एक जब शक्ति एक ही है, भगवान का ही शक्ति है। हाँ, इसका दृष्टांत मैंने उस रोज दिया था जब मैं उस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहा था। जैसे पुलिस, सिपाही, पुलिस, जो चोर और डाकू जो पुलिस को देखता है वो कैसे देखता है? उसका भयंकर रूप में देखता है। और जो भला आदमी जो पुलिस को देखता है वो कैसा अनुभव करता है? वो सोचता है कि हाँ पुलिस है तो मैं सेफ हूँ, निरापद हूँ यहाँ। बल्कि चोर देखेगा क्या, वो देखो पुलिस आ गया है, मेरा सारे काम बर्बाद हो जाएगा। और पुलिस जब चोर को पकड़ता क्या करता है? पुलिस ने डंडा से पीटता है। और कोई भला आदमी जब राजा को मिलने को जाना चाहता है तो क्या पुलिस क्या करता है? उसको राह दिखा के ले जाता है। वैसे ही जब हम भगवान को विरोधी बनते हैं तो महामाया के रूप में हमें डंडा से पिटाता है। और जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं तो जोगमाया के रूप में उन्होंने हमें भगवान के पास ले जाते हैं। एक ही माया है, भगवान का शक्ति दो रूप में कार्य कर रहे हैं। बदमाश को पिटाते हैं और भले लोग को भले लोग को रक्षा करते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद।